હિંમતનગર એક સગીરાને લવ જિહાદમાં ફસાવવાનો પ્રયાસ થયો। જાણીતા જ્વેલર્સ શોરૂમમાં ખરીદી કરવા આવી હતી સગીરા। ખરીદી કરવા જતાં ધનિક પરિવારને કડવો અનુભવ થયો। પરિવારની સગીરાને ખરીદીના અનુભવને લઈને ફીડબેક ફોર્મ ભરાવ્યું। ફીડબેક ફોર્મમાંથી મોબાઈલ નંબર અને સરનામું મેળવીને સગીરાને પરેશાન કરી। જ્વેલર્સના વિધર્મી કર્મચારીઓએ સગીરાને ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। ફોટો વાયરલ કરી સગીરાને બદનામ કરવાની ધમકીઓ આપીને પૈસા માંગ્યા। આરોપીઓએ સગીરાના પરિવાર પાસે 5 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી। परिवारे पुलिस फरियाद करता पुलिस एक्शन में आई और आरटीओ बायपास रोड पर पुलिस आरोपीओं ने पकड़्या। लव जिहाद में फसावવાનો प्रयास करी खंडणी मांगता 2 युवकों ने झड़पी लेवाया है। आखा मामला में 3 लोग विरुद्ध गुनो नोंधीने पुलिस जेलना हवाले कर्या छे। फरियादी पोते कल्याण ज्वेलर्स मोतीपुरा खाते खरीदी माटे गयेला त्यारे एमनी जे पर्सनल विगतो छे एनुं फीडबेक फॉर्म भरावेलुं। एमांथी आरोपीओए त्यां नौकरी करता होय एमनी विगत मेळवेली अने पछी फोनथी तथा मेसेजथी एमनी दीकरीनो संपर्क करवानो प्रयत्न करेलो, परंतु थयेल नहीं एटले एमणे फिजिकली एनो पीछो करेलो अने ए बाबते गुनो दाखल थयेल छे। बीजी तरफ ज्वेलर्स पासेथी कर्मचारीओनी विगतो सहितनी तमाम जानकारीओ मेळवीने हिम्मतनगर पोलीसे तपास हाथ धरी छे। तो आ मामले विश्व हिंदू परिषदमां रोष फैलायो हतो। विश्व हिंदू परिषदना लोकोए आ मामलो सामे आवता ज आरोपीओने सपनामां पण लव जिहादनो विचार न आवे तेवी सजा आपवानी मांगणी करी। साथे ज कलेक्टरने आवेदनपत्र आपीने रजूआत करी छे के ग्राहकोनी माहिती सुरक्षित राखवामां आवे। एक विधर्मी द्वारा दीकरीने सगीर बाळकीने एनो डेटा मेळवी फीडबेकना नामे जे डिटेल नाम सरनामું मोबाइल नंबर मेळव्यो अने एनो मिसयूज करीने अने ए दीकरीने लव जिहादमां फसावવાનો प्रयत्न कर्यो अने दीकरीने धाक धमकीओ छेड़तीनो प्रयत्न करवामां આવ્યો। ए अनुसंधाने डीपीडीपी एक्ट छे जे 2023 નો એનો અમલ દરેક મોલવાળા કરે એ માટે રજૂઆત અમે અહીં આગળ કલેક્ટર